Start. We find ourselves thinking that because a thing has always been done in such and such a way in the past, then that must be the best possible way for it to be done, or because a certain thing has not been done before, then it should not be done now. Full stop. We have to keep a careful watch upon ourselves in this respect and try to keep an open mind. Full stop. If we try new methods in our own work, we shall sometimes be wrong. Possibly we shall often be wrong, but sometimes we shall meet with success, which makes worthwhile all our earlier labors. Full stop. Probably no more than one or two men out of all the millions living today can hope to do something so important that it will influence world thought and world action throughout the ages to come. But the methods which have served the great men of any age and helped them in their great work have value, or for us today in our less important work. Full stop. By making the course taken by those who have been successful in their special fields, we can learn better how to deal with our own situation, our own difficulties in the field of thought and of action in which we are ourselves most interested. Full stop and close. पढ़ें जी आप पहले. We found ourselves thinking that thing as always बिकॉज के बाद क्या है? and बिकॉज आ because thing as always thing done बीन डन. been done interest in such and such a way in the past, then that must be should best possible we feel that to be then, or because a certain thing done upon हैज़ नॉट बीन डन. yeah so before is one before sir before then it should not be done now. Full stop. We have to keep careful watch upon ourselves in this respect in try to keep an upon mind एंड ओपन माइंड. and open mind. Full stop. We have tried to methods in our own work. We shall sometimes be wrong. Possible we shall often पॉसिबली. possibly we shall often be wrong to sometimes बट समटाइम्स. to sometimes बट समटाइम्स. ये उधर से ना एक फाइल वो उसने टाइप की है, वो ला के उसका प्रिंट निकालो. but sometimes we shall meet what success each makes
while and our earlier neighbors, full stop, probably no more than यहाँ से समारा पढ़े आप, ये नया पैरा मैंने लिखवाया प्रोबेबली, नो मोर देन से जल्दी लिखना कि समारा। आवाज़ नहीं आ रही आपको? चलो म्यूट, तब मैं बोली जा रही थी, बाद में देखते। जी मिल गया आपको? जी सर। हाँ जी पढ़ें। तो कैसे पढ़ना है? पॉसिबल नो मोर देन। प्रोबेबली नो मोर देन। जी सर। Probably no more than one or two men with millions living to do can help to do something was most with delay influence worth than word then and worth man throw out the ages ages to come, but the method which have several and of Served the- and which are served the great man which not and oh sorry sir of and ये आपने कितनी दफ़ा not लिखा था? which कभी कुछ पढ़ रही है, कभी विच पढ़ रही है, help कभी ओ कर was- रही है, कभी कुछ। क्या क्या पढ़ रही है ये? तैयार नहीं किया था ये? बताओ, ये आपने तैयार नहीं किया? सर किया था सर, यहाँ से अटक आवाज क्यों रही है? समझ नहीं आ रही थी सर, किया यहाँ से आवाज की समझ नहीं आ रही थी, कट आवाज आ रही थी। क्यों जी, बाकियों को भी कट के आवाज़ आ रही थी? नहीं सर, हैं? नहीं सर, हाँ फिर ये क्यों गिला कर रही है? शायद हैंड फ्री के सर मस्त हो। आपकी आवाज़ ही मुझे तो ऐसी लग रही है। हाँ हम्म, हेलो चलें जी, जुडिशल का लिखें। कौन पढ़ेगा पहले? मैं पढ़ूंगा, जिसको आप कहेंगे वो पढ़ देगा सही। चलें, आसान सी डिक्टेशन है, मुश्किल नहीं लिखवा रहा आज। ये तो किया हुआ आपने पहले का। ये उसकी है। रेडी जी? उधर क्लास बंद हो गई। सर ही है, अच्छा सर नहीं है, सर ही नहीं है। चलो बस फिर हम भी चलते हैं। हैं सर, आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया सर ने। ये आवाज़ें सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो गई है, पूरे दिन की फिल्म भी और ये भी और वो भी सारी जो है ना। ये तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो ये सुन के ना हंसेंगे। चलें लिखें जी। सर जी वैसे सर ये करप्शन है वैसे, रिकॉर्डिंग वाली सर। हम्म,
सर जी पीछे आवाज आलू वाला आ रही है किसके घर के पीछे आ रहा है? आलू ले लो सर जी यही प्लाट। तो। सर मेरे तो नहीं है इधर गली में। ये कौन म्यूट हुआ रमीज की फौरन? गली में होगा। किसी की है? नहीं सर मेरी गली में मेरे भी घर नहीं है। में थे, मेरे घर में आया हुआ, मतलब गली में आया हुआ था। इसे म्यूट कर दे सर जी। चलें जी, ठीक है जी। मैंने किसी को कर दिया। ये रोज़ा कौन खुलवा रहा है पहले? समारा को कहा था। सर सर आपने कहा था मैं खुलवाऊंगा। ये तो लॉकडाउन है, मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन आप लोगों को क्लास किस लिए दे रहा हूँ? चलो मैं तो आ सकता सर हूँ जी अब तो जिसके घर खत्म आना हो चाहूँ गया है। तो। सर कुछ जाके अब ऐसे सर कर जी लेते, लॉकडाउन ऑनलाइन भेज देती हूँ। चले जी, सर लिखिए जी लॉक डिक्टेशन। अभी डिस्कस करते हैं इस पर। स्टार्ट। All the three accused were tried by the court of Mr. Asghar Shah Khilji, Learned Additional Sessions Judge 2, Bannu, full stop. Void judgment dated 15 January 2007. He convicted accused Malik Khairan and acquitted accused Amir Habibullah alias Mirbal and Javed Khan, full stop. Now, Malik Khaira, convict oblique appellant, has preferred criminal appeal number 4 of 2007 against his conviction, and Musammat Khan Khudara, complainant, has preferred criminal appeal number 7 of 2007 against the acquittal of accused Amir Habibullah alias Mirbal and Javed Khan to be jointly decided by this judgment, full stop. I have heard arguments of Mr. Gohar Zaman Kundi, advocate for the convict oblique appellant and acquitted respondents, accused Mr. Anwarul Haq, advocate has been heard for complainant, full stop. Mr. Farooq Akhtar, advocate, argued for the state, record has been consulted, full stop. The convict appellant and the acquitted accused respondents were charged in the trial court on 2/9/2004 on 2 counts under section 324/34 PPC, full stop. The first count was regarding effective firing on the complainant Musammad Khan Khudara, and second count of the charge was regarding ineffective firing on Muhammad Jamil, husband of the complainant, full stop. During the trial, prosecution produced evidence on both the counts, and the statements of accused recorded under section 324 CRPC reveals that all the three accused were questioned on both the counts mentioned in the charge, full stop. However, while recording the impugned judgment, learned trial court has neither convicted nor acquitted the accused under the second count of the charge pertaining to the ineffective firing on Muhammad Jamil, husband of the complainant, full stop, meaning thereby that no decision was given on the second count of the charge, full stop. This is a clear cut violation of section 367 CRPC, which is not curable under section 337 CRPC, being a serious illegality on the simple ground that there is no decision of the trial court over the second count of the charge pertaining to the ineffective firing over Muhammad Jamil, full stop. In this respect, the judgment of the Honorable Apex Court in the case of Farooq Sayar versus Chairman NAB 2004
SCMR SCJ 117 bracket में B and C can be referred wherein it has been held as under. Failure to specify in judgment the points for determination shall fall short of requisition standard. Such an omission on the part of court is not curable under section 537 as absence of decision on points for decision and reasons in judgment amounts to an illegality which prejudices the case of accused. Full stop. High Court is empowered under section 423 A and D to remand the case to trial court for writing judgment in accordance with the requirements of section 367. Such remand order would be in line with the law laid down by Supreme Court. Full stop. In this state of affair, I am constrained to accept both the appeals, set aside the impugned judgment and remand the case to trial court under section 423D CRPC with the determination to rewrite judgment after listening arguments of London Council for the parties on merits strictly according to law. Full stop. The parties are directed to appear in the trial court on 16/5/2009 and close. सुनाए जी, कौन सुनाएगा पहले? मुजम्मिल मैं सुनाए। पढ़ता हूँ सर जी. All the three accused were tried by the court of Mr. Asghar Suhail Khan, learned additional judge to Bannu. सेशन जज हाँ, additional session judge to Bannu for judgment असगर शाह खिलजी. Asghar Shah Khilji, learned additional session judge to Bannu for judgment dated 15 January 2007. Wide judgment dated Yes sir, wide judgment dated 15 January 2007. He convicted accused Malik Khan and yes sir, convicted accused Malik Khan and acquitted accused Abdul Habib Amir Habibullah. Amir Habibullah alias Mirbal and J. K. ये था जो नहीं आना, पता नहीं क्या था सर. Javed Khan. Javed Khan will stop. Yes sir, Javed Khan will stop. Now Muhammad Khaira convict over appellant has preferred criminal appeal number 4 of 2007 against his convict Musammat Khan conviction Musammat Khan Khaira complainant as preferred criminal appeal number 7 Khan Khudara complainant as preferred criminal appeal number 7 of 2007 against the acquitted of accused Amir Habibullah alias Mirbal and Javed Khan to be jointly decided by this judgment. Full stop. अवैस पढ़ें जी. I have heard argument of I have heard arguments to Mr. Gohar of Mr. Zaman Kundi, advocate for the affected Advocate General. इधर एडवोकेट जनरल कहाँ गया? भाई आवाज सही नहीं आ रही, चार आवाजें आ रही हैं भाई. ये हैंड फ्री खराब है यार, ये पंखा बंद करिए एक मिनट सर. चलें, इतना रमीज आप पढ़ लें. वो पीछे से बात करो जी सर. कन्विक्ट पब्लिक आवाज इसकी बहुत ज्यादा वो हो रही है, खराब हो रही है सर. आप ऐसे लगता है सर दो यार पढ़ें जी, पढ़े रमीज. एडवोकेट जनरल फॉर द कन्विक्ट पब्लिक appellant and acquitted. खाली एडवोकेट ही है यार, एडवोकेट for the convict public appellant and acquitted respondent accused Muhammad Fawadul Haq Mr. Fawadul Haq advocate has been नहीं है, ये है अहमद, पता नहीं सर, AH है सर, अहमदुल हक क्या बता रहे हैं, आमिर
अफवारुल हक की है। अनवारुल हक है, अनवारुल हक advocate has been heard पढ़ो वो पढ़ो भी इसकी पढ़ा सर जी। पढ़े आप रमीज Advocate has been heard for complainant full stop. Mr. Farooq Ahmad advocate फारूक advocate अख्तर Farooq Akhtar advocate heard for that the stated regarded has been consolidated the convict रिकॉर्ड हैज appellant बीन कंसल्टेड the court has been consulted the convict appellant and the acquitted oblique accused respondent were charged in the trial court on 2/9/2004 on two convicts under section टू काउंट्स 324 of two counts under section 324/34 PPC. The first count regarded Was. effective was effective FIR on the complainant Mr. Khan. effective firing on Effective firing on the complainant Mr. Khan फवाद खान खुदारा complainant फवाद नहीं भाई मुसम्मात खान मुसम्मात है। खुदारा सम्मात खान खुदारा complainant of the charge कंप्लेनेंट कहाँ से आ गया and seven- second count of the charge. अच्छा मुझे complainant of the charge समझ आइए and second count of the charge 7 regarding आप ineffective लोग दोबारा अच्छा मेरी बात सुने आप लोग दोबारा नेट से इसकी जी सर। प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं नहीं सर दूध नहीं की क्यों वहाँ अपलोड आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आप दोबारा से मशक कर सकें ठीक है सर आज इतना से भी दोबारा टाइम शुरू नहीं कर होता देते कि दोबारा आप लोग वहाँ से वही हिस्सा निकाल के जहाँ डिक्टेशन होती है उसी को दोबारा जी वहाँ सर। से उतने पार्ट को सुन लिया करें ठीक है सर आज और टाइप करते हैं इसको बाद में आइंदा से ना टाइप फिर दोबारा 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से लिखा करें इसको रिकॉर्डिंग हो जाती है ये फ़ायदा हो जाता है कि 2-3 दफ़ा मशक की जा सकती है Yes sir. हाँ तो इसको यूटिलाइज किया करें जब 2-3 दफ़ा ठीक है सर। प्रैक्टिस करेंगे मशक के बगैर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते ठीक होगा सर आज मैंने इंटरव्यूज़ FI तकरीबन कोई 15-20 इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं उसमें से एक रिटायर्ड टीचर जो थे जो बहुत ही ज़बरदस्त जिनकी इंग्लिश थी फ्लुएंट थे इंग्लिश में उन्होंने कहा था नथिंग विदाउट प्रैक्टिस इन दिस वर्ल्ड कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है चाहे वो कुछ और भी है husband of the complainant during the trial prosecution accused क्या हो गया अब evidence on both the counts in the statement of accused regarding under section 324 CRPC reveals that of the three accused All the three. were all the three accused were questioned on the counts mentioned in the charge full stop. However, while regarding the accused judgment, Plenary Trial Court is neither effective oblique more convict the appellants under the under the 200 counts Under of the the charge second by count. Second count. Under the second count. second under the second count of the charge pertaining to the ineffective FIR on the Firing है मेरे वीर. ऑन मोहम्मद जमील on Muhammad Jamil Muhammad Jamil husband complainant husband of the The complainant complainant. husband of the complainant meaning whereby that any decision was given on the second count of the charge this is clear पढ़ें जी cut यहाँ से अवैस कोई आवाज़ अगर आपको आ रही है तो